Hello, welcome to Multilingual Academy. In this video today we will learn 50 important daily use vocabulary words in Arabic, English and Urdu related to home items. So let's begin. The first word is breakfast, नाश्ता यानी सुबह का नाश्ता. फुतूरुन लंच, ज़ुहराना यानी दोपहर का खाना. गदाउन डिनर, एशाइया यानी रात का खाना. अशाउन राइस चावल. अरुजुन अरुजुन ब्रेड रोटी. खुब्जुन फिश मछली. समकुन समकुन चिकन चिकन या मुर्गी का गोश्त. दजाजुन एग अंडे. बैदुन मीट गोश्त. लहमुन वेजिटेबल्स सब्जियां. खजरावातुन खजरावातुन हनी शहद. असलुन डेट्स खजूर. तमरुन बटर मक्खन. जुब्दतुन जुब्दतुन चीज पनीर. जुबनुन जुबनुन शुगर शकर या चीनी. सुक्करुन सुक्करुन फ्रूट फल. फाकिहतुन एप्पल सेब. तुफाहुन मैंगो आम. मांजू और मंजू बनाना केला. मौजुन मौजुन गुआवा अमरूद. जवाफतुन जवाफतुन पाइनएप्पल अनानास अनानास. पपाया पपीता. बाबाया बाबाया ऑरेंज संतरा या नारंगी. बुर्तुकालुन बुर्तुकालुन ग्रेप्स अंगूर. एनाबुन वाटरमेलन तरबूज. बित्तीखुन बित्तीखुन स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी. फराविलतुन और फरावलतुन मेलन खरबूजा. शम्मामुन पेयर नाशपाती. कुम्मसरा कुम्मसरा कीवी कीवी कीवी. पोमग्रेनेट अनार. रुम्मानुन रुम्मानुन. Please check out the playlist for daily speaking sentences, phrases and vocabulary series on my YouTube channel and Facebook page Asad Multilingual Academy. The next word is pot, bartan. विआउन या हांडी. qiddrun potato आलू. बतातिसु onion प्याज. बसलुन tomato टमाटर. टमाटिमु cucumber खीरा. खियारुन खियारुन carrot गाजर. जज़रुन radish मूली. फुजलुन lemon लेमू. लेमूनुन salt salt नमक. मिल्हुन salad सलाद. सलततुन garlic लहसुन. थूमुन जिंजर. अदरक. जंजबीलुन जंजबीलुन एग प्लांट बैगन. बादिंजान बादिंजान कॉलीफ्लावर. फूल गोभी. कर्नबीतुन कर्नबीत कैबेज. गोभी. मलफूफुन और कुर्नुबुन. टर्निप शलजम. लिफ्तुन लिफ्तुन पंपकिन कद्दू. यक्तीन और करउन. पीज मटर. बाजिल्ला बाजिल्ला स्पिनच पालक. सबानिखो सबानिखो ओकरा.
okra, bhindi, bamiyatun. Guys, here is a homework for you. Fill in the blanks. Fill, mirch in English dash dash, battaniyatun, kambal, zujajatun, bottle, ball, pyala. In Arabic, write in the comment box. Curtain, parda, qishtatun, sharifa, it is a fruit. Dalwun, write in the comment box in Urdu and English. Coconut, nariyal, corn, in Arabic, zuratun, and in Urdu, write in the comment box. Coriander, kuzbaratun, and write in the comment box in Urdu. So guys, this is a homework for you. Fill in the blanks and write their meanings in the comment box. See you again. Please like, share and subscribe for daily vocabulary. Thank you.